Hello everyone, welcome to Rodha. I'm happy to announce that we are launching our second batch for 2026 aspirants. The batch code is R2 and the batch starting date is 9th of December. Okay, it's an English medium batch. So by the name, you can definitely get the idea of what is going to be. I mean, it's sometimes it is a little difficult to understand things in English or understand things in Hindi. So it's going to be a batch in which we'll be teaching in both the languages, Hindi as well as English. Obviously, quant को हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं, LRDI में भी हिंदी में बात की जा सकती है, पर VRC has to be something जो कि English में ही पढ़ाई जाएगी. Somewhat we can discuss the idea behind the things in Hindi, but it has to be taught in English. Okay, so it's a English medium batch so that everybody can feel comfortable in the batch. Fine. It's a late evening batch, so batch is going to be like 8 p.m. to 10 p.m. and from 10:15 p.m. to 12:15 p.m. Okay, you'll not be having these two classes every day. You'll be having around 10 classes, 8, 9, 10, 11 classes in a week. So some days you'll be having a couple of classes, some days you'll be having one class. Okay, as and when the schedule is, we are going to design the schedule as per the requirement still. So this is what the timing you should prepare for. So late evening का time क्यों रखा है? So that everybody can join the batch, everybody can attend the live classes. They don't have to bother about job है या फिर college है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बीच में problem create कर सकती है. They can definitely join these live classes. Okay. I will recommend you to join this comprehensive batch. My name is Swapnil. I'll be taking quant in that batch. Bijesh sir is going to take VRC in that batch, and Apurv sir will take LRDI in batch. You can visit the Rodha portal. You'll get the idea about the faculty members, how do we teach, what the quality of questions we provide, how do we approach questions, and you can get the feedback from the students also. Fine, you can join the batches independently if you want. You can join Bijesh sir VRC course. You can join Apurv sir's LRDI course. He's an excellent faculty. Bijesh sir is an experienced campaigner. बहुत साल हो गए उन्हें पढ़ाते हुए. He has taken, he has mentored, taught so many students in his career. Same as the case with Apurv sir. Excellent resource. Fine, you can see his marathon on YT. He has taken so many lectures on YT for the students. My name is Swapnil. I am in this industry for the last 20 years or so. I started teaching in 2005. I'll be taking quant in that batch. Fine. So basic idea क्या है इस वीडियो का कि हम सारी चीज़ें हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं एग्ज़ाम को, हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी हैव. आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बिकॉज आई टेल यू व्हाई. Once you join the comprehensive course, you have a single point of contact, single point of resource where you can get different classes. बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शेड्यूलिंग एंड ऑल, क्योंकि शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं कोई क्लास क्लैश हो रही है, कहीं कोई क्लास क्लैश हो रही है. इट विल बी slightly in a problematic area for us. So I'll recommend you to join the comprehensive course. Fine. And you can join the independent course also, but it's my recommendation. If you want to prepare thoroughly with the best of the mentors, you can definitely join the comprehensive course. Okay. So I'll start with the basic questions which students have in their mind that क्या करना चाहिए कैट में, कैसे होगा, क्या एग्जाम है, कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या होता है, ये सब बातचीत हम करते हैं. सो वाई यू शुड स्टार्ट अर्ली, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट बी हैविंग. ओके, एंड वाई शुड आई स्टार्ट अर्ली एंड वाई, what is going to be the advantage I'm going to have and stuff. So basically I'll discuss this thing on the basis of 3 points. Obviously I'll add few more points here because this is a very important point to be discussed. Okay, there are students who are going college right now. They are pursuing their graduation as well as planning to prepare for CAT. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, दे स्टार्टेड वर्किंग बट दे वांट टू डू MBA फ्रॉम अ गुड रेपुटेड बी स्कूल्स. फाइन. स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, उनको जब दोबारा से जब एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो दी स्टूडेंट्स हैव टू रीग्रुप देयर थॉट प्रोसेस. उनको शुरू से एक बार शुरू करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, है ना. ऐसे कई सारे कैटेगरी में आप स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हो जिनको हम बोल सकते हैं कि दे शुड स्टार्ट अर्ली बिकॉज स्पेशली इफ यू लुक एट द वर्किंग प्रोफेशनल्स, they will not be having too much of time to prepare for the exam. Fine. After working for around 8-9 hours every day,
fine, and they will be having some other engagements also, so they'll not be having that much of time during their preparation. तो उनके लिए अर्ली स्टार्ट करना एक बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन होता है, बिकॉज दे कैन प्लान देयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, धीरे धीरे प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, दे गेट द फील ऑफ इट. यू गाइज प्रॉब्ली विल एग्री विद मी, जब हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो शुरू में वी गेट टू नो द एग्जाम, वी गेट टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आंसर करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अप्रोच करना होगा क्वेश्चन को, फाइन क्या क्या पढ़ना होगा, क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी मेरे को जब मैं एग्जाम दूंगा, जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मेरे स्ट्रॉन्गर एरियाज कौन से हैं, वीकर एरियाज कौन से हैं, कौन से पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड लॉट मेनी थिंग्स. आई कैन लिस्ट 20 डिफरेंट रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड why you should start early. Okay, so especially those who are working, they'll not be having too much of time, and especially जब आप कैट अप्रोच करते हो तो आपके पास ना जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टाइम क्रंच हो जाता है. तो वी एंड अप फोकसिंग ऑन अ फ्यू टॉपिक्स. सर मैंने अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लिया है, या सर मैंने LRDI में ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ये और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो बता दो. फाइन, दैट इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई जनरली डिस्करेज, क्योंकि ऐसी प्रिपरेशन में यू आर thinking in terms of chances, not in terms of surety. Okay, so I will recommend ki start as soon as possible, start as early as possible, so that you can work on your weaker areas. Starting early is the luxury you can provide to yourself. Later on you don't have to worry about कि मेरे का अभी बहुत कुछ पढ़ना है, मेरा छूट गया है, मैं कैसे मैनेज करूँ, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक कर लेता हूँ, ये पढ़ना क्या ज़रूरी है, इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ सकता हूँ क्या, एंड स्टफ. तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही हमारी प्रोसेस को बहुत ही क्लटर्ड कर देती हैं. बहुत ज़्यादा प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस हमेशा बन नहीं पाता एग्जाम को लेके. तो स्टार्टिंग जल्दी करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड साथ ही साथ जब आप स्टार्ट जल्दी कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ टाइम ऐसा मिलता है जो आप और भी चीज़ों पर डिवोट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट improving in general awareness, self-awareness, which is going to help you during the GD and PI process. Fine, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब चीज़ें जब हम क्लासेस में बोलते हैं, स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग इट. Even if they do couple of days in a week, they have an habit of doing these things for a month or two, they'll get used to of it. तो बहुत advantageous situation में students पहुंच जाते हैं by the time they are going to take CAT and appear for GD and PI. Okay? तो जिनके पास टाइम कम है डिवोट करने के लिए डेली बेसिस पर, उनको देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा. इट्स अ परसेंटाइल सिस्टम. एम आई राइट? ऑल ऑफ अस नो CAT doesn't provide you percentage marks, it's a percentile system. Now I can give you the clear picture, all of us understand this. परसेंटाइल सिस्टम का मतलब क्या है? इट डजेंट मैटर कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है, आपका एग्जाम बाकी लोगों से कितना अच्छा हुआ. दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसेंटाइल सिस्टम इज. सो इफ यू जनरली वांट टू गेट इनटू अ टॉप B school, you should score around 99.5 percentile in CAT to get calls from very good B school. Okay, fine. In fact, for certain reasons you have to score 99.6, 99.7 percentiles also for few particular B schools, but 99.5 percentile is a good score. फाइन. और उसके लिए हमें जब प्रिपरेशन करनी होगी तो हमें मालूम है कि 99.5% लोगों से बेहतर मार्क्स लेकर आने, विच इज़ स्लाइटली अ चैलेंजिंग टास्क. तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्रिपरेशन में इंडल्ज करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा आपके पास स्कोर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आपके पास चीज़ें जो हैं उनमें वीक एरियाज बहुत नेग्लिजिबल होंगे, स्ट्रॉन्गर एरियाज ज़्यादा होंगे. यू कैन एक्सेल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम. फाइन. एग्जाम मुश्किल है, ईजी है, I'll be indifferent from it. In fact, those students who prepare for exams in slightly a better manner, they expect कि थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम आए, so that they are having a clear cut advantage over the others. Okay, so जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स विल बी फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. उनके पास अपने कॉलेज के चैलेंजेस हैं, एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, assignments and whatnot. They have so many things. So when they start preparing early, they have similar kind of advantage over the other people. क्योंकि उनको पता है कि वो ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते. They can start their preparation in a slow and steady manner. Fine, just by attending the classes, getting the idea about the questions, getting idea about the concepts and everything, getting the feel of the exam, and slowly and gradually they can build up on that. है ना? धीरे 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 करके उनका स्किल बढ़ना शुरू होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी शुरू होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको आसानी होती है. दे विल फील डेफिनेटली एट होम व्हेन दे आर टेकिंग द मॉक्स एंड सेक्शनल एज वेल एज एक्चुअल कैट. ओके, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. अर्ली स्टार्ट करना इट्स अ लग्जरी, लेट मी टेल यू गाइस.
If you have taken that decision, half of the battle is already won. Let me tell you, it's very very important, because आप अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सीनियर से इन बार एक बात करेंगे कि भाई क्या फ़र्क है 99 परसेंटाइल में और 99.8 परसेंटाइल में. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. Fine. The quality of calls you get at 99.8 percentile and the quality of calls you get 99 percentile, ये बहुत फर्क है. तो अगर मुझे बहुत अच्छा परसेंटाइल चाहिए तो आई नीड टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली. ओके, यू नीड टू डिवोट एज मच टाइम एज पॉसिबल, बिकॉज अगेन आई एम प्लानिंग टू रिमाइंड यू at the later stage of the session also that it's a percentile system. The more you prepare, the better you get. The more you practice, the better. It's just like learning how to drive. I have given these examples on my numerous videos on YT. ड्राइविंग करना मुश्किल नहीं है, पर अच्छी ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है. अच्छी ड्राइविंग करने के लिए आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए. यू मस्ट हैव सीन फ्लाइट्स, जो पायलट्स होते हैं, बस फ्लाइंग आर्ट्स का एक्सपीरियंस होता है. द बेटर पायलट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ more flying experience. Okay, so this is similar to the learning driving and being a pilot and all. Fine, just giving a very small crude example. The more you practice, the better you get. हम अपने वीक एरियाज पे काम करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए. अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम let's say we start preparing 4 months before the CAT and we feel that मेरा for an example quant week है. Fine, या फिर let's say मेरा VARC week है, कोई भी एक सेक्शन वीक है, तो विल नॉट बी एबल टू डिवोट दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज एंगेजमेंट तब भी होंगे, प्रिपरेशन तब भी मुझे करनी होगी, मेरा कॉलेज होगा, वर्क जॉब होगा, सब कुछ होगा. तो हम उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे अपने उस वीकर सेक्शंस को एक कंफर्टेबल सेक्शन बनाने में, है ना. तो स्टार्ट अर्ली करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है. स्टूडेंट्स दो डिड नॉट हैव मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पढ़ने का पता चलेगा भाई कि मैथ्स जो हमने पढ़ रखा है और जब हम क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग. इट्स गोइंग टू बी प्योरली एप्टीट्यूड लॉजिक बेस्ड मैथ्स. इट्स नॉट गोइंग टू बी फार्मूला बेस्ड मैथ्स कि हमने ये फार्मूला याद कर लिया, ऐसी सिचुएशन होगी, इसमें फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा. सो दैट इज द मेजर रीजन स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स. दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इतना मुश्किल नहीं है मैथ्स जितना हमें लगता है. पर ऑब्वियसली हमारे पास एक टाइप का सिनेरियो है, हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी यूज टू अप्लाई फॉर्मूला इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली लॉजिकल. तो उनके पास ये लॉजिक इंप्रूव करने के लिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए, लॉजिक को एसिमुलेट करने के लिए टाइम होना चाहिए, है ना. तो इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को, अगर आप एक बार क्लियर कट है आपका थॉट प्रोसेस, आपको कैट की तैयारी करनी है, यू हैव टू राइट कैट इन 2026, I will recommend start as soon as possible because that is going to be a huge advantage. I don't see a upside of delaying your preparation. I mean, nobody can tell me that this is the advantage I'm going to have when I'm going to delay the preparation. It's not going to be any advantage situation for you. Okay, so this is what the basic I would like to discuss about starting early. And the most important part, there are multiple exams you have to take. Okay. सो कैट का एग्ज़ाम है, उसके एक महीने के अंदर जेड का पेपर एग्ज़ाम होगा, उसके बीच में आपके पास स्नैप और एनमेट के पेपर्स भी होते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है. आप स्टार्ट करोगे तो उनकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, उनके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, सो दैट हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि कैट के 7 दिन बाद मेरा स्नैप का पेपर है या एनमेट का पेपर है और उसमें हम 7 दिन में सारा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. ऑब्वियसली आई टीच यू इन द क्लासेस, विल टीच एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल, बट यू नीड सम टाइम टू रिवाइज थिंग्स, यू नीड सम टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, रिविजिट द कंसेप्ट्स कि भाई इस एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कैट की बात करता हूँ, उसका LRDI इज इंटायरली डिफरेंट. जेट में LRDI नहीं आता, डिसीजन मेकिंग आता है. फाइन, स्नैप का जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अलग होता है. एनमेट का जो DI का पोर्शन बिल्कुल अलग होता है. तो हम सबकी प्रिपरेशन करेंगे, पर हमारे पास रिविजन करने का टाइम बहुत ज़रूरी है, बार बार रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग. द मोर यू ड्राइव द बेटर यू गेट. जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिविजिट करोगे, उतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करोगे. यू विल बी सरप्राइज टू नो बाय द टाइम यू आर गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, यू विल बी सो मच प्रो इन सो मेनी थिंग्स जो आप अभी सोच भी नहीं सकते, जो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि ओह इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था ये. इट वॉज ईजी, आई कुड हैव डन दैट. फाइन. सो बेसिकली आइडिया क्या है स्टार्ट अर्ली करने का, कि हमारे पास कंफर्टेबल होना, चीज़ों से यूज टू होना. I should not feel that things are not under the control when I'm taking the test or I'm taking actual CAT. Okay, I should be able to recollect the concept so quickly that my response time to the question is so low कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, है ना. मेरे को जल्दी पता चल जाता है कि भाई क्वेश्चन में क्या लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी,
है ना. एंड द most important part of this aptitude preparation is you are not preparing only maths, you are not preparing only LRDI, you are not only preparing for VARC. There are things which you should understand. ये aptitude test का basic structure जो है, there is going to be a holistic improvement of a personality. Okay, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दोगे इन चीज़ों को सीखने का, इन चीज़ों को एसिमिलेट करने का, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखोगे. फाइन. आप एग्जाम में देखो DI क्यों पूछते हैं, आप VRC क्यों पूछते हैं, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर इतना क्यों फोकस किया जाता है बार बार. यू हैव टू अंडरस्टैंड, विल बी अ मैनेजर, यू हैव सिनेरियोज, यू हैव टू utilize all those skills which we are going to learn with the help of these things, quant, LR and DI. Okay, तो ये पूछने का उनका पर्पस है. जितना अच्छे से आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल एनहेंस होगी, उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा, उतना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी ग्रोथ में. फाइन. So that's why I always suggest students start as early as possible. If you have made up your mind to prepare for CAT, there is no point delaying, and I don't see any point जिसका आपको बेनिफिट होगी भाई मैं लेट स्टार्ट करूंगा बेनिफिशियल होगा. लेट मी टेल यू, आई हैव सीन स्टूडेंट्स रिग्रेटिंग एवरी ईयर. थोड़ा सा जल्दी शुरू कर लेते तो बहुत फायदे में रहते, थोड़ा सा 2 मंथ लेट हो गए सर, 3 मंथ लेट हो गए, हमने जुलाई में ज्वाइन किया, हम थोड़ा और पहले स्टार्ट कर लेते और पहले स्टार्ट कर लेते. सो स्पेशली आई मीन फ़ायदा क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, नुकसान बहुत सारे हैं. हमारे पास टाइम जितना कम होगा प्रिपरेशन करने के लिए, उतनी हम क्रिस्प एंड कोइंसाइज प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे. स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो पाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली पैरामाउंट व्हेन वी आर preparing for an aptitude test. Okay, so just understand this. Take this example very seriously. If you want to learn how to drive, you can take the lessons for 15 days with the help of some driving school, but you have to practice as much as possible. Okay, so that is what the advantage is of starting early. Okay, so this is what I want to discuss. What we are going to provide you. Fine. Basically in the course, when you join the entire course, the full comprehensive course, में क्या क्या मिलेगा? We'll be starting from very basic, absolutely basic. Fine. Then we'll move to advanced level. Fine. That doesn't mean basic is completely done. With this advanced level, we have started a very, very unique course here that is called concept capsules. Concept capsules is something which we have provided to our CAT 2025 students. It's a huge success, let me tell you guys. It's an awesome course. What is the advantage of it? You have understood the concept, you have understood the theory behind the concept, you have solved few questions in the classes, and you have practiced these things. But you understand, थोड़े समय बाद क्या होता है, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है कंसेप्ट, उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं कि हाँ ऐसे कुछ अप्लाई होता था. कॉन्सेप्ट कैप्सूल में क्या है, वी हैव डन द सिमिलर कंसेप्ट जो हमने पढ़ रखा था इन बेसिक क्लासेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दोज कंसेप्ट्स इन एडवांस क्लासेस. कॉन्सेप्ट कैप्सूल में हमने वही कंसेप्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू, छोटे छोटे कैट के क्वेश्चंस के थ्रू, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू आपको दोबारा से सिखाए जाएंगे. थोड़ा सा शॉर्ट होगा, उतना एक्सटेंसिव नहीं होगा, सो दैट यू कैन रिविजिट द कंसेप्ट्स. आइडिया ऑफ द कंसेप्ट कैप्सूल यू कैन गेट विद द नेम ऑफ इट, concept capsule. Okay, so you can understand, it's going to be very helpful, and we have generated those concept capsule videos for probably, I guess, for every topic. I haven't seen any topic which is left out. Probably even if we have missed some of the topics, for CAT 2026 Aspirants we are going to add many more such videos. Okay, so you can practice, you can start from basics, you can move to the advanced level, you can revisit the basic concept with the concept capsule, you can revisit the classes and everything. तो ये जो कोर्स है, फाइन, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स का एक बड़ा एडवांटेज और होता है दैट आई डोंट एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स कि आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करके आओगे और बहुत सारा मुझे बहुत तेज पढ़ाना है. इट्स नॉट दैट केस. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्युटली बेसिक, we'll move towards advanced level. It's a journey. We cannot start solving very complex question in the very first class. I'll give an example. If I look at some topic, I have taken 10 to 11 classes of TSD in my most of the batches, which is, I guess, probably the most number of classes across the industry. And that can happen only when I have time to do these many classes. Okay, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं उनमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है. हम बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में करते हैं. हमारे पास अगर टाइम नहीं भी है तो क्लास भी अटेंड करने से आपको बहुत कुछ लर्निंग होता है. आप समझ सकते हो 10-11 क्लासेस ऑफ TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस अलोन
which is around 8 to 9 questions in every class, which will be around 100 questions of time, speed, distance alone. And that is about the classes only I'm talking about, not a test or anything, or the mocks or sectionals or anything. This is pure classes I'm talking about. Okay, तो ये बहुत बड़ा advantage होता है जल्दी start करने का. You might be thinking that I'm talking, I'm focusing on early start as soon as possible too much, but trust me guys, I'm not going to tell you anything which is not worth doing. It's very important to start as soon as possible, as early as possible, to have that basic advantage over the others. Okay, we have, once what happens, we have live classes. These three classes are done live. For any reason you have missed the classes, you are not able to attend the class live, and you can attend the live class. If you are not able to attend it, you will be getting recorded. 2 घंटे के अंदर आपके पोर्टल पे वो recorded lecture आ जाता है. वो आप पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हो. जितनी बार देखना है उतनी बार दे सकते हो. जो भी आपको करना है वो आप उस वीडियो में स्पीड इंटर एक्सचेंज करके स्पीड 1.25, 1.5, 1.75, 2 टाइम्स तक का स्पीड करके आप उस लेक्चर को देख सकते हो. फॉर इंस्टेंस आप कोई कंसेप्ट जल्दी समझ पा रहे हो, समझ में आ गया, तो आपको लगता है ठीक है, आई मीन स्टूडेंट्स आर आस्किंग आउट, लेट्स मूव अहेड विद दैट क्वेश्चन, और हमें समझ चुके हैं, है ना. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच यू शुड यूटिलाइज टू द गुड इफेक्ट. तो ये लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं आपके पास. रिकॉर्डेड क्लासेस में एक पीडीएफ डाउनलोड करने का सिस्टम भी होता है. पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास का, so that you can solve that PDF on your own later on. And if you are not able to solve the question, any question, you are not able to recollect the concept behind any question, you can watch the video from that particular instance. Okay, so ये सारी चीज़ें हैं, पूरा इकोसिस्टम है इसका. फाइन, एंड दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद क्लासेस में इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. You just have to take test, you just need to practice, you just need to revisit the concept which we have done in the classes. Okay, but that doesn't mean we are going to do this much only. It'll be probably mind blown once I discuss the entire offerings which we are going to provide to the students. Okay, आप पढ़ के थक जाओगे, हम पढ़ाते बहुत हैं, लेट मी अपफ्रंट टेल यू, बहुत पढ़ाते हैं. आप स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो. जितना हमारा सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एप्टीट्यूड टेस्ट से, उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल महसूस होगा ड्यूरिंग एग्जाम. जितना ज़्यादा आपने वैरायटी के क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए होंगे, डिस्कस किए होंगे, उतना आपको कंफर्टेबल महसूस होगा. ओके, you can sense what I'm talking about. This is completely a mentorship driven program. It's not about that I'm going to take class and I'm going to be away from the class for till the time I'm going to take the next class. Okay, पूरा एक डाउट सेशंस का एक हम बैच का ग्रुप बनाते हैं. वी डिस्कस, फैकल्टी मेंबर्स आर मोर और लेस अप्रोचेबल, बातचीत करते रहते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आप स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन. आप बैच ज्वाइन करोगे, विल बी फीलिंग लाइक पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट. लेट मेनी पीपल वी हैव हायर्ड सो दैट दे कैन clarify your doubts, they can give you solutions of your small problems and something. Okay, you can talk to the faculty members admin group के admin होते हैं जिनसे आप टैग करके बात कर सकते हो. they will reply promptly. so basically mentorship driven preparation का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ऑफ नाउ. अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में जा रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पुश फ्रॉम समबडी हु कैन टेल अस कि भाई जल्दी करो, प्रिपरेशन करो, don't lose focus and stuff. So people are so much inclined towards helping students here. We all are teachers by choice, not by accidents. So मतलब आपको बहुत comfortable महसूस होगा, that I can promise. हम कभी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं छोड़ते कि तुम अपने हाल पे छोड़ दिया, करना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो. It's not going to be the case. We always focus, we always ask students, we take general doubt sessions, we take strategy sessions, we can take planning sessions. lot many planning sessions are going to happen. मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा पूरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में जो हम टच नहीं करेंगे. 3 महीने बाद अब प्लानिंग क्या है, आगे क्या प्लान करना है, 4 महीने बाद क्या प्लान करना है. वी कैन कीप ऑन टेकिंग दो सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, 1-on-1 सेशंस, फोन कॉल्स एंड एवरीथिंग. अभी हमने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट शुरू किया था. हम सारे फैकल्टी मेंबर्स ने अपने दिन के कुछ आवर्स पर्टिकुलरली स्लॉट्स दे रखे थे. उस पर वैसे तो बच्चे करते रहते हैं फ़ोन, हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला था ये ड्यूरिंग डेडिकेटेड आवर्स है, इसमें आपके पास फैकल्टी मेंबर्स को आप फ़ोन करो, दे विल डेफिनेटली पिक अप द कॉल. ओके, सो दैट यू कैन आस्क पीपल हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स, हाउ व्हाट इज़ टू बी डन विद अ पर्टिकुलर क्वेरी, व्हाट इज़ टू बी डन विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो आप बड़े आराम से बात कर सकते हो. तो इट्स आई नो देयर इज अ comfort zone we need to feel when we are preparing for the exam like that. Okay, and I can assure you will not be short on that. That is something which we are known for it. Okay, तो आप
डेफिनेटली बैच ज्वाइन कर सकते हैं वाला पूरा का पूरा कोर्स इसमें इसी तरीके से डिजाइंड है सो दैट यू कैन प्रिपेयर विद अस. आपको जो एसएस मिलेगा 10th of January 2027 तक आपका एसएस है. इसमें GDPI प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्लासेस शुरू होंगी, सब कुछ होगा. सो वी टेक एंड टेक एग्जाम. आपको जेड का कोर्स भी इसी में मिलेगा. आपको जेड के लिए अलग से कोर्स शायद ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. सो दिस समथिंग वी हैव. ओके. Questions, I told you so many questions. I've just given you the idea of one topic, time, speed, distance. Fine. So we'll be discussing so many questions in the classes, countless questions I'm going to discuss, let me tell you. Everything has to be so precise, every concept, every notion about a particular question, every exceptional case, every जनरल केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी पर्टिकुलर टॉपिक. ओके. सो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इट्स जस्ट बॉल पार्क आइडिया कि 9000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इट्स गोइंग टू बी मच मोर देन दैट. ओके. विल बी गेटिंग कोर्स पोर्टल पर देर इज अ कोर्स पोर्टल mox.rodha.co.in. ओके. इस पर आप पूरा का पूरा मॉक सेशन और सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे सकते हैं. जो आपका रोधा वाला पोर्टल है उस पर जाके आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. पोर्टल नेम इज rodha.co.in. okay. You'll be getting complete access to these two portals as soon as you are going to join. Fine. There is not going to be any question provided to you from our side which is going to be without any video solution. All the questions going to have video solutions जिससे आपको डिटेल में समझने में हेल्प होगी. आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हो, दोबारा समझ सकते हो. एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन सो मच डिटेल दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन as well as the how to apply the same theory in the next question also or some other question which is going to be of similar type. Fine. Test which we are going to provide, it's going to be timing based questions obviously because we have to prepare according to the exams requirement. CAT में 3 सेक्शन होते हैं. हर सेक्शन के ड्यूरेशन अभी तक जो है 40 मिनट है. फाइन. एंड नेक्स्ट ईयर इफ समथिंग हैपेंस दैट्स वी डोंट नो बट एज ऑफ नाउ CAT 2024 तक 40 मिनट्स 3 सेक्शंस. सो टाइम बेस्ड प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जनरली व्हेन स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द एग्जाम उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी कि 40 मिनट्स के बाद सेक्शन ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा. फाइन. तो ये प्रेशर हैंडल करना ये सब कुछ इस टेस्ट सीरीज में सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू आप धीरे धीरे सीख जाते हैं. फाइन. Difficulty level has to be CAT level difficulty level. Fine. And some of the questions are going to give you so many concepts in one question so that you can apply the variety of concept in different questions. Okay. So difficulty level hoga, I am telling you it's not going to be very easy. Some of the tests are going to be difficult, some of the tests are going to be easy, some of the questions are going to be easy, difficult, moderate. We have designed the test portal in such a fashion that everybody has something to learn from. Okay. Easy questions, moderate, difficult, very difficult, every kind of questions we have provided to the students so that we can learn, we can understand, and we can understand how to leave a question, how to attempt a question, how to gauge the difficulty level of the question. इस हिसाब से पूरा का पूरा पोर्टल डिजाइन किया गया है. Fine. So I mean this is a hell lot of preparation you can understand by looking at the sheer volume of the questions. A big number. Fine. Mock test portal, I just told you mocks. This is the portal mox.rodha.co.in. Okay. Now this year we provided 105 sectional tests to the students. 105 sectional tests, that means independent sectional, 35 VARC, 35 LRDI, 35 coin, 30 full length mocks, which is probably the highest in this industry. Full length mock. Fine. And the difficulty level of the questions of these mocks are going to vary. Some of the mocks are going to be easy, some of the mocks are going to be difficult, some of the mocks are going to be moderate because we cannot predict the difficulty level of the exam. CAT 2023 was difficult paper. CAT 2024 was easy to moderate paper, not very difficult as compared to 2022 was okay paper. So we have to prepare according to the difficulty level. So we have designed this course in such a fashion that we'll be able to cater all the possible scenarios. Difficult भी टेस्ट देंगे आपको, easy भी देंगे, moderate भी होगा, हर प्रकार का टेस्ट मिलेगा. Okay. Now we have topic wise test. That means आपने arithmetic कर लिया, arithmetic का मॉक दे दिया.
ठीक है, आपने अलजेब्रा कर लिया, अलजेब्रा का अलग से मॉक दे दिया, फाइन, आपने ज्योमेट्री कर लिया, ज्योमेट्री का मॉक दे दिया, मॉडर्न मैथ्स नंबर्स का मॉक दे दिया. सो दैट इज व्हाट समथिंग which we have designed. It's a comprehensive platform. You don't have to look for any other resource that I can promise you. It's a very, very, very well designed, well organized course. You'll definitely going to enjoy it. Fine. We are going to provide you support for NMATs. 40 NMAT snap mocks are there. So NMAT snap के लिए अलग से mock खरीदने की जरूरत नहीं है. 10 ZET mocks we are going to provide. So you can look at the test portal. It's going to be complete, exhaustive, comprehensive course which you can opt for. Fine. But that is included in the comprehensive course. You don't have to buy anything else apart from this particular comprehensive course. Okay. Fine. Exam specific preparation, I'll tell you. For CAT, we have these mocks and sectionals I explained. You know, Z ke liye decision making GK focus prep with 10 mocks. Fine. Decision making classes, Ravi sir will be taking. I'll be taking quant in that batch. Okay, for after the CAT, that 1 month duration we provide students for Z booster course. जो बच्चे के Z का पेपर पढ़ते हैं उनकी फिर से हम शुरू से एक बार रिवीजन सॉर्ट ऑफ तैयारी करवाते हैं. वी गेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर Z. जिस टाइप के क्वेश्चंस का फोकस Z में ज़्यादा रहता है, जैसे Z में LR नहीं आता है, उसमें डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता है. रवि सर विल बी टेकिंग दैट सेक्शन. GK का क्वेश्चंस होते हैं, GK विल बी टॉट टू यू. फाइन. ऑब्वियसली GK इज समथिंग विच इज हैव्स टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम. सारा GK नहीं पढ़ा जा सकता, तो सब कुछ उसमें प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है. ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन का कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो अनटच्ड है. एवरीथिंग इज परफेक्टली इन बैलेंस. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू. फाइन. दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स. स्नैप एग्जाम, एडमिट एग्जाम, जो कॉलेजेस हमें एक सेफ्टी नेट की तरह होते हैं जिनके थ्रू हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी हमें फोकस करके चलना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि जब हम पेपर की तैयारी करेंगे तो हमारे को ये नहीं देखना है कि हम सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे को MBA की तैयारी करनी है. आई शुड गेट इनटू अ गुड बी स्कूल with CAT or ZET or SNAP or NMAT, whatever the exam I'm going to take, I need to get into a good B school. Okay, so accuracy और speed और ये सब अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग एस्पेक्ट होता है. फाइन. जैसे स्नैप का पेपर छोटा एग्जाम है, उसमें आपको स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होगी. NMAT में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर अडेप्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट. तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मॉक्स बनाए गए हैं, टेस्ट बनाए गए हैं, प्रिपरेशन डिज़ाइन की गई है, सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, आपका कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया. इट्स नॉट लाइक कि बस कुछ भी पढ़ा दिया और यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एग्जाम. ठीक है, आप खुद ने पढ़ लेना. दैट इज नॉट द केस. ओके, this is something which I told you. This is a very important aspect. Fine. We have a doubt group जिस पर आप डाउट पोस्ट करते हो. डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो आपके डाउट अप्लाई करते हैं. वीक में 2 डाउट सेशंस होते हैं. जो फैकल्टी मेंबर्स क्लास में हैं वो आपसे डाउट्स पूछते हैं. आप पूछोगे भाई कोई प्रॉब्लम है, फैकल्टी मेंबर्स विल क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर. ओके, सो बहुत सारा ऐसा नहीं कि कोई डाउट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैपेजर्ड मैनर में आपको परेशान होना पड़ेगा. डाउट क्लियर इंस्टेंट एंड वेरी प्रॉम्प्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. कोई भी क्वेश्चन डाउट्स तो आएंगे ऑब्वियसली, जब हम पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स आएंगे, तो आप डाउट्स फैकल्टी मेंबर से भी पूछ सकते हो. मेंटर्स हैं, 2 लाइव डाउट सेशन पर वीक होते हैं. आपकी क्लास के क्वेश्चंस में डाउट है, आप क्लास के क्वेश्चंस में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स कंप्लीटली अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. ओके, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट ग्रुप ऑन विच यू कैन आस्क योर डाउट्स. फाइन. दिस इज, यू कैन गेट द आइडिया द वे आई एम टॉकिंग, है ना. जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा. This personalized guidance throughout the year. You don't have to look for any other resources. Fine. We are more than happy to help our students. Okay. So इसमें I can promise you this is something which is going to be an experience for you. You cannot even imagine what kind of support we provide to the students. Okay. Okay, fine. Concept capsule course. I have talked about this particular course. We have recently launched this course for 2025 students. It was a mega hit. Let me tell you. Students are absolutely gaga over this particular course because see, you are getting all the concepts which you have learned, but not with the bulk of questions, with the few questions which are crisp and concise to understand the concept behind the particular variety of question. Okay, so इस बार से हमने प्लान किया है कि स्टूडेंट्स को हम असाइनमेंट में देना शुरू करेंगे, डेली प्रैक्टिस मटेरियल. ओके, तो हम खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं इस बार से. लास्ट ईयर तक नहीं था. दिस फॉर 2026 स्टूडेंट्स. फाइन. सो इट्स नॉट अबाउट कि एक बार हमने अच्छे से पढ़ा लिया, कॉम्प्लेसेंट हो गया. वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस. जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. ओके,
सो असाइनमेंट्स के साथ साथ DPBs भी मिलेंगे आपको. ओके, इस साल से हम शुरू करने वाले हैं. वी आर वर्किंग ऑन इट and every students will be getting DPPs for every particular topic, not one or two, but for every topic. Fine. You can change your batch. Flexibility is there to change your batch. You can change your batch 4 times a year. Fine. I think that you don't have to worry about it. Once you start the R2 batch, you don't have to change the batch. That I can promise you. The quality and the expertise we guys have, it's not going to be the case where you have to change the batch. That I'm 100% confident of it. Okay. People are taking, let's say I'm taking quant in R2 batch, I'm taking quant in R4 batch or LRDI in R6 batch. You can change your batches. You can do whatever you feel like with the shifting of the batches, because there are possibilities. आपका working है, आपका shift change हो गया तो आपके पास timing comfortable नहीं है तो आप batch change कर सकते हो. But because of the quality, you don't have to change it. That I can promise you. Okay, quality is absolutely our top priority. Fine. You can learn as per your schedule. That's what I'm telling you. You can change your batch if you want. If it is absolutely necessary, you can change your batch. But if it is not, I will recommend you to stick to the timings. एक आदत हो जाती है, एक comfortable माहौल बन जाता है peer group के साथ, faculty members के साथ, है ना? Okay. Physical study booklets. You'll be getting 12 booklets apart from whatever the plethora of questions we are going to provide. Okay, because physical booklet का थोड़ा सा charm अलग होता है. So you'll be getting quant ka booklet, VARC, LRDI booklet. That is completely different from the questions we are going to give you in the classes. That is absolutely a different variety of question. Okay, fine. So this is physical booklet. You'll be getting once you are done with the payment. We are going to courier the physical booklet. You'll be getting this booklet as soon as possible. Okay. This is something which is a unique feature of Rodha. I would like to discuss this thing in little detail, because see what happens when you prepare for an exam. You should understand what will happen after the course completion. Okay, after the course completion, in my opinion, CAT का जो course है वो complete नहीं होता है, कभी भी complete नहीं होता है. People have asked कि उनका course लंबा है या course completion बहुत ज़रूरी है, course completion लंबा चलता है. There is nothing called course in CAT. It's an aptitude test. The more you practice, the better you get. I cannot say this is the theorem which I am going to get in exam. ये important है, इसको पढ़ लो, ये exam में आती हर साल आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. I cannot say this is the variety of question which is very important. ये कर लो बस, ये तो पेपर में हर साल आती है, ऐसा ही होगा. Fine. You have to practice as much as possible. Okay. So after the basic classes are done, we are done with the classes. We provide students with the booster course. What is booster course? The name itself, it's very explanatory. What is we are going to do? We are going to revise every concept, whatever the damn concept we have done, with the variety of questions. Okay. Variety of questions in what sense? Arithmetic में मान लेते हैं हमने 2 टॉपिक मिला के परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI का एक बूस्टर क्लास किया, 2 बूस्टर क्लास किए, 3 बूस्टर क्लास किए, टाइम एंड वर्क के 2-3 बूस्टर क्लास किए, TSD. अपार्ट फ्रॉम डूइंग दोस 10 क्लासेस, हम 2-3 क्लास और बूस्टर क्लासेस करते हैं. Apart from doing 15, 16, 18 classes of geometry, we'll be doing 3-4 classes of geometry for practice alone. Okay, so that is what booster course is all about. The idea behind booster course is intensive revision with the variety of concept which we have done, with the slightly better and higher difficulty level questions. Fine. That is something which is going to help you a lot. इस साल हमने 20 days 20 मैराथन किया था CAT 2025 स्टूडेंट्स के लिए. वी रिसेंटली फिनिश दैट थिंग, 20 days 20 मैराथन. I mean, it was, again, I will say that it's a cherry on the cake. Fine. We discussed every concept one more time. That's what I told you. The more you prepare, the better you get. I took couple of 2-3 marathons, 4 marathons. Ravi sir took 3-4 marathons. Apurv sir took 3-4 marathons. Shrikant sir, Abhishek sir. People are there who have taken these many marathons. We have covered every possible aspect of the question, every variety which is known to anybody. We have covered all that variety in the classes itself. We have discussed everything. So booster classes, course खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि classes खत्म हो गई तो आप अपने हाल पे हो. We'll be doing so many things. We'll keep on engaging you in sessions, classes. You can participate in doubt sessions. You can ask your doubts. You can repeat the course because the video recording is provided to you. You can attend concept capsule, marathon classes, booster classes, and whatnot. Right? So the course is so much so designed that you'll be having absolutely everything covered. कुछ भी ऐसा नहीं है aspect एक course का जो छूट जाता है जो इस course में आपको ना मिले. Fine. Okay. Now the latter part of the exam is I would like to bring this into your notice.
एक चीज़ लोग जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या ही आता है कैट में, हमने तो वीडियो देखे हैं और इसमें तो काफ़ी कुछ आसान लग रहा था, आई कुड हैव सॉल्व दिस, इतनी लंबी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा क्यों पढ़ेंगे हम। आई गिव अ बेसिक आइडिया अबाउट द कैट। लेट्स से मैं अगर क्वांट की बात करता हूँ, क्वांट के पेपर में जैसे अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर 2024 में, लेट्स से यू हैव 20 मार्क्स, अराउंड 20 मार्क्स, 20 19 मार्क्स, बॉल पार्क आइडिया, you could have got 90 percentile. 20 marks, that is 7 questions maximum, 7 6 7 questions, okay, probably more than this. Fine. Now understand, out of 22 questions 90% लोग जो ऐसे हैं जो कि 20 नंबर भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो what is the problem? The problem is underestimating the cat, okay, ओवर एस्टिमेटिंग द स्कूल बेस्ड लर्निंग, जैसे हम स्कूल में करते हैं वैसे नहीं चलता। यहाँ पर आपके पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस जो आपने नहीं देखे होंगे, नया ही कोई स्ट्रक्चर बना के लाएंगे, बट कंसेप्ट वही होगा। तो यू शुड बी थॉरो विद द कंसेप्ट, यू शुड बी थॉरो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जब आप टॉपिक बहुत अच्छे से समझते हैं, जब आपके एग्जाम में जाके क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगर आप मैं कैट 2023 की बात करता हूँ, चलो कैट 2023 QA सेक्शन, 25 marks will give you around 95 percentile if I'm not wrong, more than that, which is you can understand 95% लोगों के नंबर 8-9 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो there is a complete disparity between the efforts we need to put in and the thought process we have when we are preparing for the exam like that. तो प्रिपरेशन क्यों नहीं होते क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेशंस ले रहे हैं, आपके पास YT पे बहुत सारा क्लासेस पड़ा हुआ है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग फ्री सेशंस भी पड़े हुए हैं। रोधा के अगर आप पोर्टल पर जाओगे तो ही आपको, कई सारे चैनल पर जाओगे तो भी बहुत सारे आपको वीडियोस पड़े हुए मिलेंगे। देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द प्रिपरेशन एंड एक्चुअली hypothetical preparation, actual preparation of the exam. And actual preparation requires discipline. Fine. Actual preparation requires consistency and practice. Lot of practice. And इसमें से एक भी चीज अगर आपकी कम है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वी एंड अप इन द बॉटम 90% ऑफ द पीपल। ओके, आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एग्जाम अगर देखने में आसान लग रहा है, बिकॉज यू लुक एट फ्यू क्वेश्चंस इन फील के ये तो हम कर लेंगे, बट आपको जब 40 मिनट्स की ड्यूरेशन में प्रेशर हैंडल करने की आदत नहीं होती है तो आप एग्जाम में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है ना। तो अगर आपको मैं सिंपल, ये डेटा बैक्ड है, इट्स नॉट समथिंग विच इज not there, you can analyze the previous year papers, you'll get the idea. Fine. 57 marks in 2025 would have given around 92 percentile in total, अगर आपका composite score 57 marks है। फाइन, 120 मिनट में 19-20 क्वेश्चंस, आप देखो 6-7 मिनट के आसपास, 6 मिनट के आसपास मेरे पास एक क्वेश्चन करने के लिए ऑन एन एवरेज, विच इज अ टीडियस टास्क, नहीं कर पाते हैं लोग, 8-10% लोग भी नहीं ला पा रहे इतने नंबर, है ना। क्या 2023 में इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट, इट वॉज अ डेंस पेपर, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। 50 मार्क्स के आसपास आपका शायद ये परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम में हम इस समय महसूस करेंगे जब एग्जाम देने जाएंगे। अगर हम एग्जाम से पहले ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो आई शुड गिव माई सेल्फ एम्पल चांस टू लर्न वेराइटी ऑफ कंसेप्ट, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, everything whatever the best possible I can do, okay, because see, this is an exam, we understand probably this is the last degree I am going to get, है ना। इसके बाद हम बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करके बहुत अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, right? So we should not make any sort of excuse in this particular preparation कि देख लेंगे या ठीक है, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। तो अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एग्जाम वैसे कंटेंट वाइज डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, बट जब आप स्कोर करने के बारे में बात करोगे, स्कोर 99.5%, आप समझ सकते हो कितना चैलेंजिंग होगा इन दिस सिनेरियो, ओके। सो यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम, यू शुड हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू शुड हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फाइन। स्किल बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, उनके पास अगर स्किल है तब भी उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा चांसेस कम है। आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम राइट नाउ, यू कैन सी दैट पीपल आर स्किल्ड, दे हैव द स्किल्स, आई नो, ऑल ऑफ अस नो, but they are not able to execute because they don't have exposure, they don't have discipline, they don't have
consistent practice behind this. Okay, they are not. We were one of the countries who used to play spin so well. Now we are struggling with this spin against spin as well. Okay, so you have to understand application and of things is altogether a different ball game when it comes to एग्जाम लाइक कैट. चीज़ें समझ में आना इट्स डिफरेंट, पर उनका एप्लीकेशन आएगा जब आप बार बार सेम चीज़ प्रैक्टिस करते हो. तो मल्टी लेयर प्रैक्टिस सेम टॉपिक की करने से फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम. ओके, आई मीन आई हैव provided every information. Cherry on the cake is we don't know what we are going to do for 2026 aspirants. 2026 aspirants. We always plan something special, something extra. We always go extra mile for the students, those who are going to join to Rodha. But there is again going to be something which is going to be absolutely beneficial. I can, if I keep on talking about the services we provide, it's going to be a 3-hour session. We are redoing their SOPs. We are helping them in form filling. We are helping them in analyzing what should be the ideal form filling scenario for them. कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है. फाइन, कैट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, उनके SOPs को कैसे रेक्टिफाई, बहुत सारी सिचुएशन. तो it's a something, see, it's going to be an experience. I don't want students to feel left out when they are going to join Rodha. Okay, that is something which you always try. Not me, all of us. Okay, so let's talk about the result also. Fine. I cannot emphasize the importance of result fine that much because I know बहुत important है. इससे ज़्यादा एम्फेसिस मैं नहीं दे सकता इस चीज़ पर. अगर आप रिजल्ट को लेके ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसकी आपको ज़रूरत, जो आप चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो. तो प्रिपरेशन भी रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए. फाइन. क्या 2024 इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच. So, I mean, बहुत ही bumper results थे. There were 10 students who scored 99.90 plus percentile. I cannot take the name. There are so many students in this picture only. You can see most of the people are scoring very high percentile in this picture. Fine, this is me, Ravi sir, KD sir, and people from diverse background have scored this percentile. It's not about कि वो engineer था या नॉन इंजीनियर था या किस कॉलेज से था. इट डजेंट मैटर. वर्क एक्सपीरियंस था उसके पास, नहीं था. बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है. आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी वी वर व्हेन वी मेट दो स्टूडेंट्स एट अचीवर्स मीट. बिकॉज जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपके पास वन वे कम्युनिकेशन होता है, आप बात करते हो बट यू हैव नॉट सीन द स्टूडेंट्स. बट जब उनसे मिले तो इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस. लेट मी टेल यू गाइस, probably the best exposure experience of my entire career. Okay, so I mean this is something which we look forward to. है ना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए. हम भी चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जाके भी स्कूल में एडमिशन लें. सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपनी अपनी उम्मीद होती है. वी वांट एवरीबडी शुड गेट वॉट एवर दे वांट, वॉट एवर दे फील. ओके, सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे. इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस कोर्स. लेट मी टेल यू, बहुत 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 प्लान्ड, बहुत ही कोइंसाइज, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है. You can definitely join that course. Fine. Z में, Snap में, किसी भी कोर्स में आपको कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी, will definitely provide that help to you. Okay. Fine. So with this particular note, I am going to sign off. My name is Swapnil again. Okay. Fine. Thank you so much.